goal about which Honorable Prime Minister has been speaking with a good sense of confidence, and that is because people of India have met with the challenges post-COVID and built the recovery on a strong footing. And therefore, it is possible that we'll be the third largest by 27-28, but also that our GDP will cross $5 trillion by that time. By 2047, as I said earlier, it is a conservative estimate that we'll reach at least 30 trillion in terms of our economy. But one emphasis that I would like to place is Viksit Bharat is one of the Panch Pran about which Prime Minister had spoken about. And Panch Pran actually marks the soul of Viksit Bharat. Panch Pran is the one with which we had targeted 2047 as the developed country goal. But together with it, the emphasis to remove the colonial mindset which has been in us and which is important for us to get over has been very clearly emphasized on. Enormous work has to be done. People, the states, stakeholders, central government, all of us will have to work to achieve that. I'd like to highlight only about 6 or 7 specific milestones, which I call milestones, but they are the foundational pillars on which Amrit Kal is going to put all the efforts together to take India into that Viksit Bharat by 2047. Antyodaya is for that inclusive growth, in which, of course, you know about the free food scheme. I'm not expanding on it. But empowering aspect of it is the Swanidhi, which can be taken as a very important example. 57 lakh loans have been granted to street vendors so that the smallest of small person can build his entrepreneurship based on those sovereign guaranteed, in a way, collateral-free loan which they get. And very many schemes of the Prime Minister, one particular on which the UNICEF has come up with a statement saying this open defecation-free ODF families have actually saved 50,000 British pounds. This is UNICEF saying it. So they say 50,000 British pounds have been saved, or in other words, they've averted to that extent spending on healthcare. So in a way, it is a saving for poorer families. So this scheme of Swachh Bharat and the ODF has actually saved poor people from spending on their health-related matters. The next major, which I would highlight, is the direct benefit transfer, where 37,000 crores of rupees was transferred even during COVID, the lockdown period. 16 plus odd crores of people were covered by it. And therefore, even during a lockdown, if that could help us, the DBT, since after that you are seeing 33 lakh crores has been transferred under the DBT, resulting in savings of almost 2.73 lakh crores for the government. Because pilferages were cut down, you were able to use technology to make sure benefits reach those who deserve it, and government was not spending to unknown entities. The third, which I'll highlight, is a financial inclusion program, which India has never seen before like that. Yes, financial inclusion has been a long-drawn goal on which every year a certain incremental number of people would come in. But now I'd like to highlight the fact that almost 50 plus crore people have already been brought into formal banking system. Where were we in 2014-15? Only 15 crore people were with bank accounts. Now that has gone up to 50 crore. Equally, connecting to the rural India and farmers. Particularly, I'll take the example of agro-processing, where the value addition element comes for agrarian products. Only 2 mega food processing plants existed in this country in 2014. That's gone up to 24 in 2023, within a matter of 9 years. That brings in value addition to the products. The farmers get better price. The value addition brings jobs, and some of them get exported also, the products. The other highlight which I'd like to bring in as the pillar for Amrit Kal, on which Amrit Kal is going to build towards a Viksit Bharat, is about the emphasis given on sunrise industries. India will now become
at least in-house producer of semiconductor capacities. EV adoption is happening in a big way. And therefore, these are things which have emanated from the FDI policy of the country. What is about the FDI policy? Just look at the numbers. India had attracted between 2000, April 2000 and March 2023, 23 years, we had attracted $919 billion in FDI. But it is important for us to recognize that 65% of this $919 billion, that is about $595.25 billion, had all reached India in the last 8 to 9 years. So in the 23 years, you're receiving $919 billion, of which 595 plus billion dollars have come only in the last 9 years, beginning 2014. So your FDI is coming in. It's like water. It flows to the lower ebb. Where policies bring in greater certainty, convenience, ease of doing business, FDI flows in. Of course, disruptions of higher US Fed rate and other things can divert it elsewhere. But despite that, we've been receiving that kind of a flow of the FDI. It's not as if it's coming only for manufacturing, it's coming also for service sector. Service, particularly exports, have also seen a surge from 151 billion that it was US dollars to 325 billion US dollars. So these are all strong foundations which have been laid in the last 9 years. There are one or two more I'll add to it. The third largest startup ecosystem, the PLI scheme, which now cover 14 critical sectors. The UPI, about which, of course, BVR Subramaniam had very clearly mentioned, 100 billion transactions in just the calendar year 2023, over 180 lakh crores being the total value which is being transacted. There's global recognition. G20 was very clearly awed of India's experience in this area. So with all this, technology and digitization have brought people together. 50 crore people have been brought into the banking system. Now look at where the unbanked have come into the banking area. 44% it was where we were in 2014. Only 44% had accounts. Now more than 80% people in this country have bank accounts. Look at Gujarat, therefore, in this context. And Gujarat, which has released its Viksit Bharat vision document. It is a state which has 5% of our population, just 5%, contributes 8.5% to our GDP. 19% gross value added every year happens from Gujarat to the GVA of the total country. Total gross value addition to the country, 19% comes from Gujarat. The per capita income is 1.7 times the national average. So it is a state which actually is rapidly moving forward, and the state is growing at 12% CAGR between 2011 and 2021 in the 10 years, while the national average is 10.4%. So rightly, we are here in Gujarat talking about its vision for 2047, and certainly 2047, which is going to be developed country for India. And in that, the engine of growth, I see Gujarat being very clear in its vision. I welcome the document, and I'm sure the people of Gujarat, under the leadership of the Chief Minister, will be able to move in that direction. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your insightful address. Under the mentorship and guidance of Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, the state of Gujarat has steered towards progress, ensuring the overall development of all sectors. Gujarat has emerged as a role model state for the country and now is gearing up to harness the vision of Viksit Bharat at 2047 through Viksit Gujarat. We are honored to invite the resilient, empathetic and inspiring leader, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, for the keynote address.
खाने के बाद तुरंत यहाँ इतने लोग हैं, मतलब जो विजन दे रहे हैं उसमें सबको इंटरेस्ट है। और सुब्रमण्यम जी जो बोल रहे थे वो हम पक्का इसका ध्यान रखेंगे, ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा। ट्वेंटी 47 में विकसित भारत के लिए गुजरात का रोडमैप विषय पर आज आयोजित सेमिनार में हमारे सबके साथ उपस्थित भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, गुजरात के प्रिंसिपल एडवाइजर डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम जी, हमारे गुजरात राज्य के मुख्य सचिव श्री राजकुमार जी, अधिक मुख्य सचिव श्री जे.पी. गुप्ता जी, प्रेस मीडिया के मित्र, सभी उपस्थित महानुभाव, सभी को मेरा नमस्कार। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुआ कहा था कि आने वाला 25 साल का समय देश के लिए अमृत काल है। उन्होंने वर्ष 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के निर्माण का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी का मंशा अमृत काल को भारत के विकास का स्वर्णिम काल बनाने की है। प्रधानमंत्री जी का विजन एक ऐसा विकसित भारत का निर्माण करना है जिसमें देश समृद्धि की नई ऊंचाई प्राप्त करे, जैसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, सरकार और नागरिक के बीच का सेतु अधिक मजबूत हो तथा वर्ल्ड क्लास आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो। प्रधानमंत्री जी के हर आह्वान तथा नए विचारों का वास्तविक रूप देने में गुजरात हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहा है। विकसित भारत एट 2047 के निर्माण में भी विकसित गुजरात के निर्माण से बढ़ चढ़कर योगदान देने की हमारी प्रतिबद्धता है। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने नीति आयोग के दिशा दर्शन में विकसित गुजरात के लिए 2047 तक का रोडमैप तैयार किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने गुजरात को ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में अग्रिम स्थान दिलाने वाली वाइब्रेंट समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी की विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप गुजरात के योगदान का रोडमैप विकसित गुजरात एट 2047 का आज ही के दिन लॉन्च होना एक सुनहरा सुयोग है। इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में हमें आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है। मैडम, मैं इस बहुमूल्य गाइडेंस के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात ने गत 2 दशकों में विकास के अनेक आयाम स्थापित किए और देश का ग्रोथ इंजन बना है। इन 2 दशकों में 15% से CAGR के साथ GSDP की दृष्टि से गुजरात सातत्यपूर्ण तरीके से देश में सबसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों में से एक रहा है। देश की कुल जनसंख्या में 5% की हिस्सेदारी रखने वाला गुजरात देश की GDP में 8.5% का योगदान देता है। इसी तरह देश के इंडस्ट्रियल आउटपुट में 15% और देश के एक्सपोर्ट में 33% हिस्सा गुजरात का है। गुजरात देश में सबसे अधिक कार्गो हैंडल करता है और लीड्स इंडेक्स में अग्रिम राज्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप रैंकिंग में भी गुजरात देश में बेस्ट परफॉर्मर रहा है। गुजरात का यह विकास मॉडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन और मार्गदर्शन में तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए
इस मार्ग पर चलते हुए हम विकसित गुजरात के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प विकसित गुजरात के इस लक्ष्य को केवल आर्थिक या औद्योगिक विकास के से ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्र के विकास से भी प्राप्त करना है। 2047 का गुजरात कैसा हो, विकसित यात्रा में किस ऊंचाई पर हो, इस विजन के साथ हमने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए हैं। 2047 तक गुजरात के जीएसडीपी को हम 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने का ध्येय रखते हैं। आज आपने सुना होगा वहां भी 3 ट्रिलियन का तो बोले थे, वहां से सुबह में सुना हो तो। राज्य की कैपिटा इनकम 2047 तक 38 to 43,000 यूएस डॉलर करने का भी हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में देश में 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प लिया है। गुजरात को इससे पहले ही 2047 में नेट जीरो एमिशन बनाने के टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं। रोजगार सृजन में नारी शक्ति के 42% के वर्तमान पोटेंशियल को 2047 तक 75% तक ले जाने की हमारी मंशा है। गुजरात में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाल एवरेज 70 ईयर है। हम रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थीनेस इंडेक्स को बढ़ावा देकर 2047 तक उसे एवरेज 84 तक ले जाना चाहते हैं। राज्य में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और 100% हेल्थ एवरेज कवरेज मिले, सभी को शिक्षा मिले, शुद्ध हवा पानी के साथ साथ स्वच्छता सभी का स्वभाव बने, सभी को समान अवसर मिले, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात में पॉलिसी ड्रिवन ग्रोथ की बुनियाद रखी है। राज्य में उभरते क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां देश और दुनिया के उद्योगों को आकर्षित कर रही हैं। गुजरात सेमीकंडक्टर, फिनटेक्स, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में देश में अव्वल स्थान पर है। हम गिफ्ट सिटी के माध्यम से राज्य को देश की फाइनेंशियल सर्विसेज कैपिटल बनाने के लिए प्रयासरत है। विकसित गुजरात एट 2047 की संकल्पना का यह दस्तावेज विभिन्न स्टेक होल्डर्स, थिंकर्स और पॉलिसी मेकर्स के चर्चा करने के बाद हमने तैयार किया है। आने वाले दिनों में हमारे लिए नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने में यह डॉक्यूमेंट सहायक सिद्ध होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। आपके प्रेरणादायी संबोधन एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। थैंक यू Honorable Chief Minister Sir for your inspiration and encouragement. We would like to express our gratitude by presenting a memento to our honorable dignitaries at this juncture. I request Shri J.P. Gupta, Additional Chief Secretary, Finance Department, Government of Gujarat, to kindly present a memento to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you, sir. I also request Gupta ji to kindly present a memento to Honorable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman. A traditional shawl from Gujarat. We also would like to present a memento to Shri P.K. Mishra, Dr. P.K. Mishra, Principal Secretary to Honorable Prime Minister. The memento exhibiting the traditional art from Gujarat. And also, we would like to present a memento to CEO Niti Aayog, Shri B.V.R. Subramaniam ji.
Thank you so much, dignitaries. And now I would kindly request the dignitaries to please step forward for a group photograph. With this inaugural session, now we are gearing up for the insightful discussions on Viksit Gujarat, the roadmap for Viksit Gujarat. Thank you, honorable dignitaries, for enlightening this occasion by your very valuable presence. We thank Honorable Chief Minister, sir, Honorable Finance Minister, and all the dignitaries on the dais. Thank you so much. We are